Welcome to back my channel. Now we discuss about the condition of a tangency. That means under what condition a line will be tangent to a given ellipse. So the line y is equal to mx plus c will be tangent to the ellipse a square by a square plus y square by b square equal to 1 if c square is equal to a square m square plus b square. That means the line y is equal to mx plus c will be touches or tangent to the ellipse under the condition c square equal to a square m square plus b square. In other words, if c square is equal to a square m square plus b square, then the line y is equal to mx plus c will be tangent to the ellipse a square by a square plus y square by b square is equal to 1. Now we will prove that condition. ठीक है ना? अच्छा, since that line touches to the given ellipse, therefore the value of y in equation of ellipse will be satisfied. ठीक है ना? That is, since the line touches to the given ellipse, we will get a square by a square plus y square. Y means कौन पिला माने, that is mx plus c रो whole square by b square is equal to 1. That is b square x square plus a square whole into mx plus c रो whole square by a square b square loss का, that is equal to a square b square. That is b square x square plus एटा लिखिया केते a square plus b square plus 2ab a square m square x square plus 2mc square x, ठीक है तो, plus a square c square minus a square b square is equal to get a 0. That means we will write that x square common नहीं गला रहिला केते, that is b square plus a square m square into x square plus 2mc square plus a square common gala, that is c square minus b square is equal to get 0. That is a constant, that is a constant. That means that is in a quadratic polynomial of x, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. That quadratic polynomial of x gives two roots of x. x रो पिला माने केतरा रूट दबो, दुईटा. By putting the two roots of x in y, we get the values, two values in y. That means that line intersect the ellipse in two distant points. That means that is, let's say x1 y1 and x2 y2. जेहेतु पिला माने से लाइन टा इलिप्स की दीटा पॉइंट रे इंटरसेक्शन करूची, that will be scant, not a tangent. Then when that scant will be tangent, when that both points will coincide at a point. That means x2 tends to x1 and y2 tends to y1. In other words, x2 tends to x1 means x1 is nearly equal to x1. That means that quadratic polynomial represents two real and equal roots. For real and equal roots of the quadratic polynomial, the discriminant is 0. डिस्क्रिमिनेंट मीन्स कौन पिला माने b स्क्वायर माइनस 4 is equal to केते 0. ताने वर्तमान आमे लिखिबा कोन हैला कि जेहेतु लाइन टा टैंजेंट होउची हैला देयरफॉर इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल. जेहेतु रूट्स गुडा को रियल एंड इक्वल, देयरफॉर इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0. ताने डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 माने आमे पिला माने केते लिखिबा b स्क्वायर माने आमे केते लिखिबा 4m स्क्वायर c स्क्वायर a फोर्थ है b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 स्क्वायर होल इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है 4ac एटा c एटा a, दैट इज केते ना b स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर. दैट इज 80 पिला माने हमें 4 कैंसिल कर दबा, a स्क्वायर कैंसिल कर दबा, रहिला a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है तो रहिला केते ना c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर. ठीक है तो ना हमें मल्टीप्लिकेशन करिवे डाला b स्क्वायर c स्क्वायर है ये प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b फोर्थ माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर. ठीक है तो अच्छा, 80 पिला माने a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर कटि गला. ठीक है तो ताने वर्तमान आमे लिखिबा b स्क्वायर c स्क्वायर
ताने 8 पिला माने लिखिबा राइट दैट इज एटा पड़ी में आसीबा ताने b फोर्थ प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर है इज इक्वल टू है एटा पड़ी के आसला पर एटा आर पड़ रह केते ना b स्क्वायर c स्क्वायर ठीक है ना अच्छा दैट इज 8 पिला माने b स्क्वायर कॉमन हो गला पर रहिला केते ना b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर और इन अदर्स विल राइट दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस केते b स्क्वायर दैट इज द प्रूफ ठीक है ना ताने एटा पिला माने हमें जानिले कोन ना जदी लाइन टा y इक्वल टू mx प्लस c टा हला कि टचेस टू द इलिप्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दैट मींस द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c हला कि is tangent to the ellipse a square by a square plus y square by a square y square by a square plus y square by b square equal to 1 then we get the condition c square equal to a square m square plus b square और आमे लिखि परिबा आउ थरे पिला माने c is equal to plus or minus root over a square m square plus b square ठीक है तो तार माने कोन पिला माने ना जदी लाइन टा y इक्वल टू mx प्लस c टा हला कि इलिप्स की टैंजेंट हला ताने c रो वैल्यू केते हबो ना प्लस और माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस केते b स्क्वायर ताने जदी c रो वैल्यू एति कि हेई गला तान दैट लाइन इज ऑलवेज टैंजेंट टू द इलिप्स a स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 दैट इज मींस कोन पिला माने ताने हमें नोट रे कोन पाइले जदी हमर लाइन टा थिला y इक्वल टू mx प्लस c ए लाइन टा जदी इलिप्स की टैंजेंट हला स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 से इलिप्स इज टैंजेंट हला ताने c रो वैल्यू केते हबो ना प्लस और माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जदी मु c रो वैल्यू प्लस और माइनस a स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देई देनी तान दैट इक्वेशन हला कि ऑलवेज रिप्रेजेंट्स कोन टैंजेंट टू द इलिप्स a स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 ताने हमें लिखिया वर्तमान नोट रे y इक्वल टू mx प्लस और माइनस हला कि a square m square plus b square root over that is plus or minus that is the constant of the in that equation the constant like have different signs that is plus or minus but the coefficient of x and y are equal therefore it represents like two lines that equation represents two lines which are parallel lines so therefore we will say that y is equal to mx plus or minus a root over a square m square plus b square represents a pair of parallel tangents to the ellipse a square by a square plus y square by b square is equal to 1 माने वर्तमान आम पिला माने जानिले कौन ना जदि इलिप्स इक्वेशन था a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 तार इक्वेशन ऑफ द एनी टैंजेंट टू दैट इलिप्स है कि विल बी y इक्वल टू mx प्लस और माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है तो है कि नेक्स्ट आम पिला माने जिबा कौन ना ऑक्सिलरी सर्कल माने कौन पिला माने से कहूची ऑक्सिलरी सर्कल माने कौन पिला माने ऑक्सिलरी सर्कल माने कौन से बुझी ए सर्कल व्हिच कैन बी like described on the major axis of the ellipse as an diameter the circle which is described on the major axis of an ellipse as diameter
is called an auxiliary circle. Auxiliary circle माने कौन? A circle which is described on the major axis of an ellipse as an diameter. ताने गोटे इलिप्स रो मेजर एक्सिस की है कि मेजर एक्सिस ऊपर गोटे सर्कल डेस्क्राइब हेतिबो आ मेजर एक्सिस टा तार डायमीटर हेतिबो देन दैट सर्कल है कि कोन पिला माने हबो ना दैट इज कोन कहंती ऑक्सिलरी सर्कल काहे कि पिला माने ना जदी गोटे इक्वेशन ऑफ इलिप्स देछि a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 under what condition that ellipse will be a circle if a is equal to b. If a is equal to b, then we will write that equation a square by a square plus y square by b square. B means a, so a square was equal to 1. That means a square plus y square is equal to a square. That is the equation of the कौन पिला माने that is the equation of a circle with radius कौन a. Radius टा जदि a हला a is the semi length of the major axis ताने major axis length केते 2a that means radius is a ताने its length of the diameter is केते 2a ताने से कहूची जे गोटे ellipse टे लागी ellipse will be a circle ताने गोटे ellipse टे circle हबो हला कि under a condition when the length of a major axis is equal to the length of a minor axis. That means जदि a is equal to b हे गला ठीक है तो then x square by a square plus y square by b square is equal to 1 represent a circle which is called the auxiliary circle. ताने पिला माने जदि auxiliary circle हला कि ताने केमिति auxiliary circle लगे एटा धर पिला माने इलिप्स हला लगे एटा जदि पिला माने हला दैट इज ए इलिप्स दैट इज सेंटर हला कोन ओरिजिन एंड एक्सिस पिला माने केते धर x एक्सिस एटा हला x डैश एटा पिला माने हला y एटा हला y डैश हला एटा हला a0 एटा हला केते -a0 ताने ऑक्सिलरी एटा सर्कल मींस कोन पिला माने ना यार मेजर एक्सिस टा बुझबेले कि आज बिहेव्स आज इट्स डायमीटर लगी ताने वर्तमान तार मेजर एक्सिस टा लगी बिहेव्स आज इट्स कौन डायमीटर तार डायमीटर बड़े बिहेव्स करिवो ठीक है तो ताने एटा मन कर है ताने एटा पिला माने एटा हला मेजर एक्सिस ए मेजर एक्सिस रे लेंथ केते हला एटा इलिप्स फॉर इलिप्स एटा केते हला a0 एटा पिला माने केते -a0 ए मेजर एक्सिस टा को जदी डायमीटर कला जो सर्कल टा डायमीटर हिसाब रे ताको डिस्क्राइब करिक रहिला दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल एंड इट्स सेंटर एट कोन ओरिजिन ठीक है तो तापर पिला माने पढिबा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन नेक्स्ट पिला माने पढ़िबा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन
parametric form of equation of an ellipse. ताने इलिप्स रो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स ताने गोटे इलिप्स रो पैरामीट्रिक फॉर्म कौन ठीक है ना। अच्छा मन कर पिला माने इलिप्स इक्वेशन देछि a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लगी ताने लेट p रो कोऑर्डिनेट पिला माने हमें एनी पॉइंट ऑन द p रो कोऑर्डिनेट पिला माने एनी पॉइंट है लगी ऑन द इलिप्स दैट इक्वेशन मन कर पिला माने कोन देछि ना p रो कोऑर्डिनेट होछि xy लगी ता माने xy माने कोन पिला माने मु x एक्सिस रे x से गली लगी x एक्सिस रे x गली y रे y उठेली लगी दैट इज एटा पिला माने हला कोन ना दैट इज p इटा मन कर n ठीक है ना। अच्छा से पीटा को पिला माने आमे बढ़े देले से मन सर्कल को क्यू पॉइंट रे इंटरसेक्शन गला से जहार कोऑर्डिनेट हैला x से y डैश जार कोऑर्डिनेट केते पिला माने x से y डैश ठीक है तो। अच्छा जेहेतु एटा सर्कल हला ऑक्सिलरी सर्कल इट सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस पिला माने केते a तने ए पिला माने ए डिस्टेंस टा केते हला ना a तार मु x से जाईची y डैश उठीची केते उठीची लंबा भाबरे तने एटा हला कोन पिला माने ओडे राइट एंगल ट्रायंगल हलै कि मने कर पिला माने हलै कि एई कोणटा मने कर फाय आमे धर एई कोणटा नेले फाय एटा हलै कि तने फाय इज एन इसेंट्रिक हलै कि एंगल तने लेट फाय इज एन is eccentric angle. Eccentric angle means कौन पिला माने it is essential to arc measurement लगी that is सेटा arc measurement करिया पई से एंगल टाको हम कहउजंती कोन eccentric angle which is a real number lie in between the interval 0 to 2 pi that means phi is greater than equal to 0 and less than केते 2 pi ठीक है तो। अच्छा एटा पिला माने जदी हला x y डैश लगी एटा पिला माने रेडियस a तन मो x गली y उठेली तन जो पॉइंट p बोली हमें नहीं थिले दैट इज xy कोडी नहीं थिले ना इलिप्स ऊपर लगी दैट इज 80 x कोऑर्डिनेट केते हमें नहीं थिले तडा n ए पॉइंट एटा बढ़े देले 8 जोडी मीट कला ता ना कोन p डैश ठीक है तो। अच्छा ताने वर्तमान पिला माने एटा जो कोणटा हमें नेले दैट इज इसेंट्रिक एंगल हला कि दैट इज द कोण व्हिच इज एसेंशियल टू आर्क मेजरमेंट हला कि दैट मींस ताने एठु हमें x गले ताने x बाय a हला कि इज इक्वल टू कोण cos phi ताने x बाय a इज इक्वल टू केते लिखिबा x बाय a इज इक्वल टू cos phi ताने व्हाट इज x a cos phi हला कि ताने व्हाट इज y डैश ताने y डैश बाय a इज इक्वल टू sin phi ताने y डैश इज इक्वल टू कोन a sin phi हला कि बट विल डिटरमाइन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द p दैट इज xy रो हमें कोऑर्डिनेट बाहर करिबा x बाय a cos phi y डैश बाय कते a sin phi ताने ए जो a cos phi ताने एटा पिला माने x टा ए सर्कल जो पॉइंट नेले q ता पई x रो मूल्य जा ए p पॉइंट पई x रो मूल्य सेया तने वर्तमान हमें इलिप्स रे इक्वेशन कोन आनले a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर को 1 तने पिला माने हमें x बदल रे हैला कि वर्तमान केते पकेबा a cos phi तने x बदल रे जदी हमें a cos phi पकेबा हमर इलिप्स इक्वेशन दला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर तने हमें पकेबा केते x स्क्वायर माने a स्क्वायर cos स्क्वायर phi बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 a स्क्वायर स्क्वायर कैंसल दैट इज y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर phi 1 माइनस cos स्क्वायर phi मींस कोन पिला माने sin स्क्वायर phi ताने व्हाट इज y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर sin phi y इक्वल टू कोन लिखिबा प्लस और माइनस b sin phi दैट मीन्स
प्लस और माइनस माने कौन ना फॉर द पॉइंट पी वाई इक्वल टू लिखिया बी sin फाइ एंड फॉर द पॉइंट पी डैश वाई इक्वल टू लिखिया माइनस बी sin फाइ ताने एठी पिला माने हमें कौन जानिले x माने a cos फाइ y माने b sin फाइ आर द पैरामीट्रिक हैला कि फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स कौन a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ताने हम एठी जानिले कौन ना x इज इक्वल टू a cos फाइ and y is equal to b sin phi right r parametric form metric form of equation parametric form of equation of an ellipse केते पिला माने a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू केते 1 इज इक्वल टू केते 1 वेयर फाइ द पैरामीटर ठीक है तो तने दैट इज a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 हला तने इट्स पैरामीट्रिक फॉर्म कोन पिला माने x इज इक्वल टू a cos phi y इज इक्वल टू b sin phi वेयर phi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन केते 2 pi तापरे फॉर द इलिप्स जदि इलिप्स इक्वेशन था एक्स माइनस एच रो स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है कि इज इक्वल टू 1 तन व्हाट विल बी इट्स पैरामीट्रिक फॉर्म है कि तार एई इक्वेशन ऑफ इलिप्स रो पैरामीट्रिक फॉर्म कोन एटा को आमे एक्स जो आमे ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हियर सेंटर केते ओरिजिन जतरा x माइनस h y माइनस k होल स्क्वायर नोचंदी तन सेंटर टा केते hk तन सेंटर hk मींस कोन ना द सेंटर ओरिजिन इज शिफ्टेड टू कोन hk तो देयरफॉर x टा को हमें मन कर x डैश भाबिले x डैश माने केते लिखले x माइनस h लागी तने जदी x टा x डैश हे गेला तने x डैश माने हला हमर x माइनस h ठीक है तो अच्छा तने x डैश माने जदी एटा तंदा x डैश रो स्क्वायर प्लस y डैश रो स्क्वायर है कि जते सेंटरटा ओरिजिन हमर नउथले आमे नउथले कोन x a cos phi है कि सेंटरटा तले hk को पळैला ए x माइनस h होल स्क्वायर एटा जदी आमे x डैश भाबिबा तने x डैश माने केते लिखिबा a cos phi तने x माइनस h माने a cos phi तने x माने केते लिखिबा है कि दैट इज केते लिखिबा x माने a cos phi बा h प्लस a cos phi है कि x माने हला h प्लस a cos phi एंड y माने हला कौन पिला माने k प्लस b sin phi आर द पैरामीट्रिक फॉर्म है कि ऑफ द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स x माइनस h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू कौन 1 ठीक है तो अच्छा इलिप्स इक्वेशन टा पिला माने जदी हे गला जदी इलिप्स इक्वेशन हे गला y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तने व्हाट विल बी इट्स पैरामीट्रिक फॉर्म पिला माने x इज इक्वल टू लिखिबा कोन ना b cos phi है कि y इज इक्वल टू केते लिखिबा ना a sin phi है कि दैट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 है कि जदी इलिप्स टाइम इति थिबो y माइनस k रो होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x माइनस h रो होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तन यार पिला माने पैरामीट्रिक फॉर्म रे कोन लिखिबा तने y इज इक्वल टू हमें लिखिबा कोन दैट इज k प्लस a cos phi है कि x इज इक्वल टू कोन लिखिबा पिला माने x इज इक्वल टू केते लिखिबा b प्लस है कि h प्लस b sin y माने हमें लिखिबा जे k प्लस a sin phi x माने लिखिबा h प्लस b cos phi These are the parametric form for the ellipse y minus k whole square by a square plus x minus h whole square by b square like is equal to 1. These are theory of all about to ellipse. Next class we will discuss hyperbola. Okay.